अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16th। In a two-dimensional velocity field with velocities u and v along x and y directions respectively, the convective acceleration along x direction is given by option A, option B, option C and option D is v partial u partial x plus u partial y। ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2006 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। एंड नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मैं दो टर्म को देखता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। Now, suppose I am going to write a equation. This is uppercase D, parenthesis में मैंने अल्फा डाला है, this is uppercase D, और ये टाइम रेट है of अल्फा। This is equals to partial अल्फा partial t plus dot product of velocity vector with our del operator which operates on alpha, where alpha is any physical quantity. This term is called convective term. This is our unsteady term. और ये अपरकेस डी ये स्पेसिफाई करने के लिए दिया गया है लैग्रेंजियन व्यू पॉइंट। लेफ्ट साइड में हमारा लैग्रेंजियन व्यू पॉइंट है, दैट इज कनेक्टेड विद आवर ऑयलरियन व्यू पॉइंट। And we have to watch what is this Lagrangian viewpoint and this Eulerian viewpoint. According to Lagrangian viewpoint, our velocity vector, or it can be position vector too, is function of time, where in case of Eulerian viewpoint the same velocity vector is function of time and space. This particular Eulerian viewpoint is widely used throughout our FM, fluid mechanics, and we have this term D. This is also called as material derivative, or total derivative. This uppercase D denotes total or material derivative, and this relates our Lagrangian viewpoint to Eulerian viewpoint. So on the left side we have Lagrangian description of flow
and on the right side we have Eulerian viewpoint of the same flow. On the right side we have the Eulerian viewpoint of the same flow. Here this alpha can be anything. Velocity भी हो सकता है. It can be pressure. It can be the temperature or density. This alpha की जगह कुछ भी हो सकता है. And if we take this alpha equals to v, vector v, velocity vector, then this becomes our velocity vector. This is our velocity vector. यहाँ पे भी this will come, and we have our this term. So left side dv and dt equals to acceleration vector, which is equal to in vector form ax I cap ay j cap plus az k cap. If we further expand, the value of ax will come partial u partial t plus u into partial u partial x plus v partial u partial y w partial u partial z. अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं x को y से, if we put x की जगह अगर y रखता हूं, then we shall be left with this shall reduce to v, this shall become v, ये भी v हो जाएगा, and this is v. और इसी तरह हम a z भी निकाल सकते हैं. And now coming to question, if you have any confusion about del operator, then this is partial x I cap partial y j cap plus partial z k cap. This is the value of del operator. And for 2D convective term in acceleration in x direction, we will have ax equals to partial u partial t plus u partial u partial x plus v into partial u partial y. This is our convective term. This belongs to unsteady or local term. तो यहां से देखिए
तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज द कन्वेक्टिव टर्म of 2D in direction x is this much, and for further information this is our local or unsteady term. That's it. 17th question. A two-dimensional flow field has velocities along x and y directions given by u equals x square t and v equals minus of 2xyt respectively, where t is time. The equation of a streamline is option A, x square y equals constant xy square is equal to constant xy equals constant, and the option number D, this is D, not permissible, not possible to determine. ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2006 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, एंड वी हैव डिस्कस्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन टाइम एंड अगेन इन द प्रीवियस वीडियोज ऑन फ्लूइड काइनेमैटिक्स ऑन दिस चैनल, सो इट्स नीडलेस टू डिराइव इट अगेन. सो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 2D केस के लिए स्ट्रीमलाइन लिखते हैं और स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं. 2D के लिए दिस शैल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, दैट इज dx अपॉन u एंड dy अपॉन v, और we are given u which is equal to x square this t and dy, v यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2x y इंटू टाइम. ये टाइम और टाइम कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर कैंसिल हो गया x से, सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म. अब आते हैं, दैट इज द लेफ्ट ओवर इज dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस ऑफ 2y. यहां से एक चीज कर सकते हैं कि we can take this 2 right from here and place it here, और इसके बाद अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 2 ln x इक्वल्स माइनस ऑफ ln y प्लस एनी कांस्टेंट, सपोज दिस इज c1. अगर मैं देखूं तो ln x स्क्वायर लिखा जा सकता है 2 को इधर प्लेस करके, और ये इस साइड ला लेता हूं, इसको लेफ्ट साइड लाता हूं तो ये प्लस में आ जाएगा. दिस शैल बी ln y इक्वल्स, ये कोई और कांस्टेंट c2 ला लेता हूं यहां, विच इज इक्वल टू c1. यहां से वी गेट x स्क्वायर, ये प्लस साइन है तो इन 2 में y आ जाएगा इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट c2. So when we look to our option, this x square y is constant, so this is there in option number A. So option A is correct. That's it. क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं. Which combination of following statements about steady incompressible forced vortex, steady incompressible forced vortex flow is correct? Option P, shear stress is 0 at all points in the flow. Q is vorticity is 0 at all points in the flow. R is velocity is directly proportional to radius from center of vortex, and S, statement number S is total mechanical energy per unit mass is constant, and we have got the options A, which is P and Q, B, R and S, C, P and R, and option D, P and S. ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2007 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, एंड हम लोग को पता करना है कि विच
among these four options is the correct one. हम देखते हैं what is this forced vortex motion. For the case of forced vortex motion, एग्जाम्पल मैं इसका बताता हूं. एग्जाम्पल इज cylinder containing liquid and is rotated with omega equals to constant. Let me explain you. अगर मैं देखता हूं, सपोज दिस इज अवर सिलेंडर जिसमें लिक्विड फील्ड है और ये एक्सिस के अबाउट, अगर मैंने इसको इस से, अगर मैं डिस्टेंस को अगर मेजर करता हूं दैट इज रेडियली विद आर, तो इस केस में अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये फ्री सरफेस जो है इस टाइप का शेप कर लेगा आफ्टर रोटेशन. इसके डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन वी फाइंड फ्रॉम दिस दैट वेलोसिटी वेक्टर v थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r. दिस बेसिकली दिस ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा थीटा. सो दिस इज द केस ऑफ रोटेशनल फ्लो और इसके ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट. इट मीन्स v थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. यहां से हमारा अगर मैं प्लॉट करूं दोनों के बीच के ग्राफ को v थीटा एंड दिस इज सपोज दिस इज वेक्टर r, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. और मैं देखता हूं कि इस केस में अनलाइक आवर फ्री वॉर्टेक्स मोशन, यहां पे एनर्जी इज सप्लाइड, एक्सटर्नल एनर्जी इस केस में सप्लाई होता है. एंड इफ देयर इज नो मेजर लॉस देन मैकेनिकल एनर्जी per unit mass is conserved or constant. So यहां से when we look our option, this statement belongs to option number S, and this result is statement number R. So our option R and S, this combination is the correct. So our option B is the